Don't worry, I'm not going to give you some basic advices to create boundaries or stop caring. Hello again. अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है और वो वीडियो देखकर आपको लगा रही है तो मेरे बारे में बात हो रही है, तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू. अगर आपने नहीं देखा है तो आई वॉन्ट यू टू गो एंड वॉच दैट वीडियो एंड कम बैक टू इट लेटर. Hi everyone, I am Tripti Malhotra. I am an emotional stability coach. I help women to come out of emotional exhaustion and people pleasing. अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें फैमिली के साथ एंड शेयर इट विद योर फीमेल फ्रेंड्स एंड लेट देम नो दैट यू केयर. So let's now move on to our topic, which is how to stop people pleasing. Don't worry, I'm not going to give you some basic advices to create boundaries or stop caring. क्योंकि अगर वो करके स्टॉप हो जाती पीपल प्लीजिंग तो आप कब का कर चुके होते हैं, है ना. द वेरी फर्स्ट स्टेप इज स्टॉप लिविंग इन गुड गर्ल एनर्जी. व्हाट डू आई मीन बाय दैट? आई मीन बाय दैट इज समबडी यू आर समवन मैनेजेबल, you are very understanding, you're very adjusting, and you compromise and do not create inconvenience for other people. That's your good girl energy. And good girl energy is like a unconscious script in your brain. आपको पता भी नहीं चलता but this behavior is running your life on automation. आप इसके बारे में बहुत कुछ सोचते नहीं हैं but ये अपने आप हो रहा है. Let me give you an example about it. It's your birthday and you have already decided a place. You want to celebrate your birthday, or it could be any specific occasion you want to celebrate, and you're inviting all your friends and family. Now what is happening is everybody else is suggesting you different places. You now, instead of focusing on your choice of place, you are focusing on their choices, and automatically you're just deciding कि मुझे किसकी choice को shortlist करना चाहिए या किसकी choice के साथ जाना चाहिए, and you're not even focusing on your choice. So this is literally an automation. You're not even thinking about it. You are wired into the script and being more agreeable without creating discomfort for everyone, and keeping your needs and wants aside and not focusing on yourself. Now, how to stop this? To stop this, you have to come clean with yourself. You have to be honest with yourself. कि मैं क्या फील कर रही हूँ और मैं क्या चाहती हूँ, एंड चेंज योर फोकस, डाइवर्ट योर फोकस फ्रॉम एवरीबडी एल्स टुवर्ड्स यू, दैट व्हाट इज़ योर नीड एंड व्हाट इज़ योर वांट, एंड फोकस ऑन योर फीलिंग एट दिस मोमेंट. स्टेप नंबर 2, एक्सपेक्ट गिल्ट. इनिशियली जब आप अपनी चॉइसेस पे फोकस करेंगे तो हो सकता है कि कुछ चीज़ों के लिए आपको ऐसा लगे कि गिल्ट की फीलिंग आए और आपको लगे कि पता नहीं शायद मैं ये ठीक नहीं कर रही. बट डोंट वरी, इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत हो या सेल्फिश हो या रूड हो. दिस गिल्ट फीलिंग इज़ जस्ट कमिंग बिकॉज यू आर ओवरकमिंग अ कंडीशनिंग, अ वेरी ओल्ड कंडीशनिंग. पीपल प्लीजिंग का जो बिहेवियर है वो अभी कुछ सालों में डेवलप नहीं होता कि आप बड़े हुए और आपका ये बिहेवियर स्टार्ट हो गया. नो, लाइक आई टोल्ड यू इन द लास्ट वीडियो, इट्स अ नर्वस सिस्टम पैटर्न, and you created it, your body created it in your childhood. So because of this, ये conditioning इतनी पुरानी हो चुकी है कि आपको जो guilt आ रहा है, ये this guilt is coming as a withdrawal symptom. So whenever you are going to focus on your choices, expect guilt कि थोड़ा बहुत guilt आएगा, and that is absolutely all right, and it is good. अगर गिल्ट आ रहा है थोड़ा बहुत तो ये अच्छी बात है. दैट मीन्स यू आर वर्किंग ऑन रिमूविंग. बात करते हैं स्टेप नंबर 3 की. ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है. द स्टेप इज़ स्टॉप ओवर एक्सप्लेनिंग योर सेल्फ. जब भी आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, बात करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, आप ज़रूरत से ज़्यादा उनके साथ शेयर करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं, विच इज़ नॉट इवन नीडेड. आपको लगता है कि अगर आप अच्छी तरह से समझाएंगे तो सामने वाला मिसअंडरस्टैंड नहीं करेगा, सामने वाले को अच्छी तरह समझ आएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ.
In reality, over explaining is a signal of self doubt. जब भी आप सामने वाले को ओवर एक्सप्लेन कर रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा बता रहे हैं, कहीं न कहीं आप अपने आप को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं उस डिसीजन के लिए। एंड इट कुड बी any decision from very big to very small, from choosing to change a job to choosing to have a coffee or tea. You keep explaining yourself in order to gain their approval, and this is again a part of the pattern that you keep doing it in order to feel safe, to feel belonged. For example, if you don't want to go to any party or any get together, instead of giving a response and a short sentence, you keep explaining them why you saying no or why you can't say yes. I want you to do this practice for 7 days, and once you're done, come back to this video in the comment section and write about your experience and how was it. So the exercises, जब भी आप किसी को अपना डिसीजन बताएं या किसी भी चीज़ के बारे में बात करें जहाँ पे आपका एक ओपिनियन है, keep it very short, just 1 line or 2 lines, that's it. You don't have to convince them for anything. Keep it very short. No apologies, no backstory, no different situation and scenarios, nothing. And no emotional comforting. Just because you want to say no and they might feel bad, you create emotional stories and try to comfort them. No, don't do that. जब आप ये करना शुरू करेंगे धीरे धीरे 1-2 एक्सरसाइजेस में 1-2 दिन में स्टार्टिंग में आपको discomfort feel hoga that I'm not liking it. But don't worry, this is again a withdrawal symptom because you are breaking a conditioning, and this is just to show you that discomfort is your withdrawal symptom and you are leaving a old conditioning. So do it for 7 days and see your approval seeking conditioning will completely be gone. Now move on to the very important step, which is good for everyone and not just for people pleasers, is learning to be okay for being misunderstood. This is advanced level work. It is not very easy, but it is not impossible to learn to be okay for being misunderstood. Fear of being misunderstood creates a discomfort in you. And because of this discomfort, जो आप handle नहीं कर पाते, you fall back again being a people pleaser. So this is a very important step. And probably the last step, no matter how many things you do, if you're not working on this particular thing, आपकी people pleasing कभी भी ख़त्म नहीं होगी. For example, let's take an example from friendship only, that you have a friend who has a habit of renting out. उन्हें या तो गॉसिप करना होता है या अपने पूरे दिन की चीज़ें कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, यू नो, शी कीप्स ऑन कंप्लेनिंग. उनका अनवाइंड करने का तरीका यही है कि आपको कॉल करना और आपसे ये सारी बातें करना, लिटरली ट्रॉमा डंपिंग. एंड यू बीइंग द नाइस वन, अंडरस्टैंडिंग वन, यू यूजुअली डोंट से एनीथिंग, बस हाँ में हाँ मिलाना. बट नाउ if you come out of this as a people pleaser, you have to say something which she might misunderstand, saying you're a rude person or you change or you're not supporting her. These are the scenarios, these will run in your head कि अगर मैंने ऐसा कुछ बोला या उसको मना किया कि भाई अब मैं तुम्हारी ये बातें नहीं सुनूंगी, so she might discontinue the friendship, I might lose her, or she might remove me from her life. Fear of being alone, fear of not having a friend, or that closeness with somebody. That discomfort is again not easy, but being comfortable in a very small period of time will create a resentment for years. So that is why you have to learn to handle this comfort in order to create peaceful relationship for the longer period of time. Now I want you to do this practice for again 7 days and come back to this video and comment section में आके आप मुझे बताएं कि आपका experience कैसा था ये practice करने के बाद. I want you to
stop managing your image for 7 days and start managing your energy. What do I mean by energy? एनर्जी मैनेज करने से मतलब है कि जहाँ भी आप ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ यू आर नॉट गेनिंग एनीथिंग, यू आर जस्ट ड्रेनिंग योर सेल्फ, कि सिर्फ आपको सुनने के लिए, सिर्फ आपको उस कंफर्ट में आने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम, एनर्जी, पेशेंस, इमोशन इन्वेस्ट करने पड़ रहे हैं और आपको कुछ नहीं मिल रहा. हाउ यू फीलिंग इनसाइड, यू हैव टू नोटिस दैट in that very moment. If you're not feeling very well, that means you have to listen to yourself. Again, the focus has to be inside. Stop focusing on other people just because they might leave you, just because they stop talking to you. Don't want to worry. If it is very important or some kind of misunderstanding has happened, you can always go back to it after 24 or 48 hours and talk about it. But initially, you have to stop it. Do not focus on that misunderstanding and just focus on yourself. Say whatever you want to say and come back to it. Come back to your emotion, come back to your feeling. Write about it. How many situations you were handling in a week's time. How it made you feel. जब आप ये practice करेंगे and slowly you will start seeing that you're getting comfortable with this feeling. Because you're not handling your image now. You're handling your energy. You're handling your feelings, your emotions. So if this one is helpful, let me know. After your practices, come back to this video and write in the comment section and let me know how it felt. And if you still have any query, you can always connect with me. All the links are in the description. And enjoy your life, be happy, and I'll see you in the next video.